गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी बज रहा है 9:10 एंड आई हैव ऑर्डर्ड चीज़ चिकन ऑमलेट फ्रॉम आवर कैंटीन। कल वीकेंड है सो आई हैव टू कंप्लीट ऑल द टास्क थ्रू आउट द वीक। मतलब स्प्रिंट ख़त्म होने से पहले आई नीड टू कंप्लीट ऑल द टास्क। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड गाइस, चिकन चीज़ ऑमलेट, शिट टन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। लेट मी डू अ टेस्ट चेक। इट्स गुड बट यू कांट ईट इट डेली। ऐसे लग ही नहीं रहा कि कुछ दिन पहले क्रेजी बारिश हो रही थी। इट्स सो सनी राइट नाउ। ऑन टू लंच गाइस। yesterday the paneer that I bought, I cooked it in air fryer and I've bought it for my lunch. This is my lunch guys. Paneer, air fried paneer, 4 eggs and rice. राइस पे मम्मी ने दाल डाल के दिया है. So pretty protein packed lunch that I'm going to have. Even though guys it doesn't taste great, but it tastes okay. And I think your food, if every day your food started to taste great and someone gives you normal tasting food like normal घर का खाना, then you won't appreciate your normal food. You will always crave for the food जो बाहर का है, which is more tasty. I guess मेरी केस में वो हो गया because in my canteen you get every single thing. You have Subway, you get rolls, you get bowls, you get tikka items, you get starter items, anything. सिंपल करके खाना खाने की आदत जो है वो जानी नहीं चाहिए. There always has to be maintained. So what I'm doing guys, I'm trying to complete my steps before I go to home. At least 5,000 होने चाहिए before I reach home. 5 to 7,000. And wind is so cozy. Like it is not that cold, but it feels comfortable when the wind comes. Look at that guys, and tell me this isn't beautiful. Guys, just done with the office. आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ because I have done every single of my task before the end of the day. इधर सारे मेरे ऑफिस फ्रेंड्स बैठे हुए हैं. Guys, don't eat this. This is not ice cream. This is frozen dessert, and you shouldn't eat it. Black coffee, guys, the best pre-workout that you can have. Done with today's day, guys. In my office, अभी just black coffee पी के हो गई मेरी. I'm gonna go home. कुछ देखूंगा टीम से मैसेज आया या नहीं, कोई कुछ बोल रहा है या नहीं, एंड एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक. एंड इफ यस, मैं इमीडिएटली आई एम गोइंग टू गो जिम. बट नो आई कांट बिकॉज बहुत भीड़ हो गई अभी. फ्राइडे पे सब मोस्ट ऑफ द वर्किंग लोग दे लीव द ऑफिस वेरी वेरी अर्ली. सो इट मेक सेंस टू गो टू द जिम एट 8 PM ओनली. Hello everyone. So when I reached home, I got occupied with some work. I had to help the guy from the office to get something sorted. I got all occupied with that work. अभी बहुत लेट हो रहा है. अभी 9 बजने को 5 मिनट है. But that is not gonna stop us. We are still gonna go to gym and do 1 hour leg workout. So let's go. This is how guys I go to the gym. Bag है, tripod ऐसे लगाया, and then बाइक से I'm gonna go to the gym. ये बार बार खाना खाने आ जाती है यार. तो आधीच खाल्लं आहे राईट. Literally got no time to spare guys. Let's get into business.
लेट मी शो यू हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ. अभी बजे हैं 10:09. डन विद द जिम गाइस. बहुत लेट हो गया आज, बट द होल सेशन वॉज वर्थ इट. आज लेग डे था, मज़ा आया. दैट्स आवर बाइक गाइस. I just came back from the gym, and you know what? I didn't complete my steps. I'm gonna walk until and unless I hit 10,000 steps. Anyhow, I heard in some podcast, I think it was David Goggins who was saying this, कि when you think that you're 100% done, you're actually 70% done, and you still have 30% in you. And that barrier of unlocking that 30%, that is mental. That is completely unlocked by your sheer mental strength. More 400 steps to go guys, and then we are gonna hit 10,000 steps. But you know what, let's make it 10.5 thousand steps. 500 steps और extra चल लेंगे. They don't know me son. मैं बता नहीं सकता कि मेरे पैर कितने दुख रहे हैं. I just came back here after an intense leg workout. But nevertheless, I said at the start I'm gonna hit 10,000 steps by any means. I'm gonna do it guys. Let's go. 10,500 steps done guys. Check this out. What an ideal day. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, leave me a like. If you're new to the channel, subscribe. And if you have really liked this video, share it with your friend. That's it for this video guys, and see you in another one. तब तक के लिए bye.